Hello everyone. So dear ones, a very good evening to all of you over here. Well, today me, your Rakhi ma'am, is over here with the another session of Percentile Booster wherein we are going to talk about coordination compounds. Rather, we'll be actually talking about the 10 important questions from this particular chapter, the coordination compounds. Fine, I believe that you all are excited for this particular session because this is one of the chapter that is really very scoring. Once you are into the depth of the concepts, of the theory, of the numerical part, straight away direct questions come from this particular part, that means coordination compound. So you cannot afford to leave this particular chapter. Fine. So moving ahead, and let me tell you one more thing, that if you feel that this particular session is really useful for you, knowledgeable for you, it's actually helping you in boosting up your preparation for the coming JEE examination. So please don't forget to hit the like button. Subscribe the channel for the further notifications of the classes that are going to be there on this particular platform. And yes, do it now. What, ma'am? Yes, you need to actually share this particular session among your friends, okay, your peer groups, so that they can also have a boost in their preparation, since we are talking about coordination compounds. Moving ahead, before I just start anything over here, let me actually make you introduced to the Aakash BYJU'S JEE app, your one-stop solution for your preparation journey. This particular app, if I just want to talk about, comes with the plenty of unique features. Okay, so by now, since I'm actually talking about this particular app from a long time, so by now, most of you have actually explored this particular app, which basically includes the daily quizzes for daily practice problems, skull crashers, the most difficult problems, featuring the tough questions basically, and booster for learning additional concepts, in the form of tricks, tips and shortcuts, isn't it? So I believe you must have actually enjoyed by exploring this particular app. You are actually enjoying the free 14 days subscription for this particular app. Well, my dear ones, have you actually checked the live sessions? If you haven't, then go with it. Why? Because over here the live sessions are with the dual teacher model concept. So over here in the live sessions, you are going to get a chance to watch your favorite star educators like Shishir Mittal sir, NV sir, GB sir, Apoorv Mathur sir, Dr. Sachin Kapoor sir. So dear ones, what are you waiting for? Book the free trial now for this particular app and enhance your preparation. Why to enhance your preparation? Obviously, you need to actually go through you need to actually qualify your examination. That's why. And moreover, via this particular app, you are going to outsmart your competitors as well. So trust me, just click on the link given in the description box, download this particular app and explore it to the fullest. So dear ones, with this, now let's start our particular session. We over here are now going to talk about the very first question of coordination compounds, and here we are, and the question is in front of you. The question is in front of you. The total number of electrons donated by ligands to platinum ion in PTEN2Cl2. So over here, what do you mean by ligands? Obviously, ligand is a atom or a group of atom which donates their electron pair to the central metal atom, forming a coordinate bond. That is what. So we want to talk about how many number of electrons are totally donated by the ligands to the platinum ion, the central metal atom. Okay, in this particular compound given to us, it's PTEN2. What is EN? It's ethylene diamine. What is EN? It's ethylene diamine. Ethylene diamine. Okay, yes. So I just want the answer in the comment box right now. Bombard the chat box with your answer. It's a very easy peasy lemon squeezy answer. Lemon squeezy question 2. Fine. So over here, what we see in PTEN2Cl2, we are actually having two monodentate. That means this is chlorine, the monodentate ligand, and two bidentate ligand. This is our bidentate ligand. Ethylene diamine is a bidentate ligand. Why? Because over here it is going to donate the
lone pair of electrons to the central metal atom via two ways. That means we do have two NH2 group. So both the NH2 groups are donating their lone pairs to the central metal atom, that is platinum over here. So over here, if I just talk about the electrons donated by the ligands, electrons donated by ligands, if I just talk about how many electrons are donated, see, what I want to say, there are 4 electrons donated by these two NH2 groups. We are having 2 bidentate ligands, so it will be 4 into 2 plus, if I talk about monodentate ligand chlorine, it is going to donate 2 electrons. So we are having 2 monodentate ligands, so 2 into 2. So it's 4 into 2, 8. 8 plus 4 is equals to 12. This is your right answer. Option number C is the right answer for the question asked for. Hope by now most of you have given the right answer, and that's really very, very good. Moving ahead, and let's talk about the next question in front of you. Oh wow, a good question. Such type of a question do comes. IUPAC name of NiCN4 2 negative. It's the complex anion given to us. It's the complex anion given to us. Okay. So what will be the IUPAC name of this NiCN4 2 negative complex anion? Very simple, easy peasy, lemon squeezy. Yes ma'am. So over here it's basically tetracyano. Okay, it will be tetracyano. Since it's the anion we are talking about, anion, it's the complex anion. So we'll not write nickel as it is. We'll write it as nickelate. Since it is the anion complex given to us, so when we are naming the central metal atom, okay, central metal ion, so it's tetracyano. First of all, we are going to name the ligands tetracyano, and it will be then nickelate. It will be then nickelate. Okay, what's the oxidation state of nickel? So oxidation state of nickel over here is X minus 4 equals to minus 2. So X is equals to plus 2. Okay, so in the Roman numerals, it's this and ion. So it's tetracyanonickelate 2 ion. Tetracyanonickelate 2 ion. Saying it as tetracyanonickel 2 ion is absolutely wrong. It's the complex anion. So when we are getting complex anion, so if I just talk about iron, Fe, so it will become ferrate. Since over here we are having nickel, the central metal atom, so it becomes nickelate. Fine. So option number B is the right answer. C and D both are wrong. Reason being, they are saying that nickel is in zero oxidation state, and that's not true. So it's option number B, the right answer for the question asked for. Moving ahead herein, and let's talk about question number 3 in front of you. And the question is asking us about that which of the following is not an ambidentate ligand. इनमें से कौन सा ambidentate ligand नहीं है? अब what you mean by ambidentate ligand? Ambidentate ligand का मतलब यहाँ पर simply ये है that it actually, if we are having one particular, you can say species over here, it's SCN, NO2 negative cyanide. So from both of these atoms, we are going to have the electrons. Fine. Clear hai ye wali baat? That means if we are having CN, so it's the carbon and the nitrogen, both are actually going to behave as a ligand. I mean to say, if I'm talking about ambidentate ligand, that means from both the sides, there will be donation of electrons to the central metal atom, either from carbon or either from nitrogen. Clear? So just let me know. I just want to know the answer. Ambidentate ligand. Fine. Not an ambidentate ligand we need to talk about. Not an ambidentate ligand. So if I just talk about again ambidentate ligand, listen to me very carefully. Such ligands that are actually having 2 or more than 2 donor atoms. So over here we want more than 2 or 2 donor atoms. Fine. So such ligands, they do have 1 or more or 2 or more donor atoms, but only 1 donor atom. But याद रखिएगा, but only 1 donor atom is attached to the metal during the complex formation. ठीक है? ऐसे ligands जहां पर what we are having more than 2 donor atoms, 2 or more than 2 donor atoms.
Clear hai? But always remember that only one donor atom will be actually participating during the complex formation. During the complex formation. So you need to remember this particular thing. Is the thing clear to you? Yes, yes ma'am. So over here if I just talk about cyanide ion, so it's carbon triple bond N over here with a lone pair and a negative charge over here. So from both the sides, we are actually getting that there will be donation of electrons to the central metal atom, but during complex formation it will be from only one side. Fine. So it's cyano basically. It's a cyano. Okay. So this one, if I just say ki from carbon side the donation is taking place, so it will be cyano. And when the donation takes place from nitrogen side, so we will be saying it as isocyano. Isocyano. So it's ambidentate ligand. Talking about NO2. So see, it's NO2. When the donation is from nitrogen side, we'll say it as nitro. But when the donation is from oxygen side, we are going to say it as nitrito. We are going to say it as nitrito. Okay? Or you can say O nitrito. O nitrito. You can say like this also. Talking about SCN negative. Okay? So when the donation takes place, from sulfur side, it's basically, wait a minute, what I'm just doing, it's sulfur, it's carbon and like this, and its donation takes place here. Fine. If that's the case, if the donation is taking place from sulfur side, it's basically thiocyano. Thiocyano. And when the donation takes place from nitrogen side, okay, so it's isothiocyanone. Isothiocyanone. So A, B and C, they are ambidentate ligand. They are what? They are ambidentate ligand. But which one is not an ambidentate ligand? It's ammonia. Ammonia can bind only from one side. Ammonia can bind from only nitrogen side. Ammonia can only bind from one side, that is from nitrogen side. So ammonia is not an ambidentate ligand. Fine, clear? So it's option number D, that's the right answer. Rather, I'll say ammonia is a monodentate ligand. एक ही तरफ से it can actually going to donate to the central metal atom. Fine. Option number D is the right answer. Chaliye. Let's move ahead and let's talk about the next question, wherein we are going to talk about the primary and secondary valencies of copper in CuNH3,4SO4. So what is the primary valency and what is the secondary valency? Can you just let me know what you mean by primary valency and what you mean by secondary valency? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? Well, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, oh my god, I am actually getting the answers कि मैम प्राइमरी वैलेंसी ये होती है और सेकेंडरी वैलेंसी ये होती है. That's very good of you. Very good. Well, let me tell you कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है. Primary valency denotes or represents what? The oxidation number of central metal atom, and it is always satisfied by negative ligands. Write it down कि हम जब primary valency की बात करते हैं, that means we are talking about the oxidation number of central metal atom, and it is always satisfied by negative ligands. It is always satisfied by negative ligands. Moreover, ये जो primary valency होती है, they are ionizable valency. Talking about secondary valency. Secondary valency, they represent the coordination number of the central metal atom, and it can be satisfied, and they can be satisfied both by neutral ligands as well as by negative ligands. Moreover, these secondary valencies are non-ionizable valency. So note these particular point over here. Talking about this particular compound given to us, it's CuNH3, 4, 2 positive and SO4, 2 negative. If I just talk about the oxidation number of copper, so oxidation number of copper comes out to be +2. Okay. So what is primary valency? It's the oxidation number of central metal atoms. So our primary valency is 2. So I'll say all other options, you can say they are wrong. Well, talking about
the secondary valencies. Basically, they represent the coordination number. Coordination number basically can be determined by observing the ligand that surrounds the metal atom. So it's over here. If I just talk about the coordination number that is surrounding the center metal atom copper, it's basically 4 ammonia ligands. Okay, so over here it will be 4. Hence option number B is the right answer. बताइए सही बात है कि नहीं है? I believe that's absolutely true and you are enjoying this session very much. So how's your Josh? Well, I believe your Josh should be high. It should be in your activated and excited state. Just don't be lazy and don't feel asleep. Over here, let's move on to the next question of the session in front of you. So chaliye, let's talk about the next question. Aqueous solution of KCl, MgCl2, 6CH2. KCl.MgCl2.6H2O, 6H2O will give test of K positive in magnesium, 2 positive only, K positive in Cl negative only, K positive, Mg2 positive in Cl negative, Mg2 positive in H2 only. Well, my dear ones, ये जो हमें particular aqueous solution दिया हुआ है, it's basically the double salt. KCl.MgCl2.6H2O is a double salt. So it will give the test of its constituent ions, which is K positive, Mg2 positive and Cl negative ion. It was very simple and an easy question for you guys to attempt. So it's option number C, the right answer. I hope we should not waste much time on this particular question. Moving ahead and let's talk about the next question in front of you. Question क्या कह रहा है? Which octahedral coordination compound will show maximum conductivity in aqueous solution if all the NH3 act as a ligand, if all the ammonia are acting as a ligand. So what you want to say for this particular question? आपका जवाब क्या होगा? Please क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. Which octahedral coordination compound will show maximum conductivity in aqueous solution अगर सारे के सारे ammonia they are behaving as a ligand over here? हाँ जी, तो अगर मैं बात करती हूँ COCl3.6NH3 की octahedral coordination compound की हम बात कर रहे हैं, इसको भी मध्य नजर रखिएगा आप. तो यहाँ देखिए CO NH36 and it is Cl3 over here. Fine. So over here this 3 chloride ions, these are actually the ionizable valency. These are basically, if I just talk about the primary valency, isn't it? Just let me know, is the thing clear to you? Yes. So यहाँ पर देखिए, if I just talk about the compound, it's CO NH3 6 3 positive and it's 3 Cl negative ion. Fine. So यहाँ देखिए there will be 3 chloride ions that are basically outside the coordination sphere and they basically participate in the enhancement of the conductivity. तो जितने ज़्यादा chloride ions होंगे उतनी ज़्यादा conductivity होगी in aqueous solution. Talking about this, we need to talk about the octahedral complex. वो तो हमें बिल्कुल mind में रखना ही होगा. So it is CONH3 5. So 1 chlorine inside the coordination sphere and 2 chlorine outside. That means now what we are going to get is CONH3 5 Cl 2 positive and it's 2 Cl negative. For this, if I just want to talk about, it will be CONH3 whole 4 Cl2 because octahedral complex तो बनाना ही है, octahedral coordination compound तो बनाना ही है. तो यहाँ देखिए it will be 1 chlorine. So over here what we are going to get is it's CONH3 whole 4 Cl2 and now what it will be over here? Plus 1 chloride ion. So what we are seeing कि यहाँ पर in a way chloride ions जो हैं outside the sphere वो decrease हो रहे हैं when we are talking about A, B and C. So in a way more conductivity is there of option number A, of compound A. Why so? Because of more number of ions, more number of chloride ions outside the coordination sphere. Fine. So it is basically enhancing the conductivity. Fine. So it's option number A जिसका
we'll be actually going to observe the maximum conductivity in aqueous solution अगर सारे अमोनिया को हम behave करते हैं to be as a ligand. So it's option number A, the right answer for the question asked for. Okay, moving ahead and let's talk about the next question. Which of the following is or are inner orbital complex? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आपने इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा. जब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इतना फर्क आपको पता चल गया होगा. जब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इज द थिंग मेकिंग दिस सेंस टू यू? जब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ देयर विल बी प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आई मीन टू से वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डायामैग्नेटिक नेचर जहां पर पेयरिंग होगी. ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जब हम बात कर रहे हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डायामैग्नेटिक इनका नेचर होगा. हम ये वाली बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. ठीक है, क्लियर है, या नहीं होंगे. देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो अगर मैं यहां बात करना चाहूं फॉर FeCN6 नेगेटिव, तो यहां देखिए साइनाइड और अमोनिया की अगर हम बात करें, सिंस हमने सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक पढ़ लिया है तो इतना तो हमें पता चल गया है कि साइनाइड और जो NH3 लिगेंड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू have the pairing of electrons. तो अगर pairing of electrons हो जाएगी then we are going to get the diamagnetic complexes, low spin complexes, complexes which are actually having D2sp3 hybridization behaving to be as inner orbital complex. Clear है? Absolutely right है कि नहीं है? हाँ जी बताइए. वैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड कैसे हैं. इससे पहले जब हम वीवीटी की बात कर रहे होते हैं वहां पर कोई जिक्र नहीं होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का. इट्स ओनली द मैग्नेटिक मोमेंट जिसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक है, ठीक है, या पैरामैग्नेटिक है, या फिर वो लो स्पिन है, या वो इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. सिंस हमने अभी सब कुछ पढ़ रखा है तो वील बी टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सेइंग कि साइनाइड और अमोनिया जो है दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ दैट्स द केस, आप देखिए यहाँ साइनाइड है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ भी साइनाइड है. सो यहाँ देखिए इट्स Fe2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव मीन्स वी डू हैव इट 3d6. तो यहां पर आप देखिए पेयरिंग की अगर मैं बात करती हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो देख लीजिए 1 2 3 ओके 4 एंड 5. पहले 5 एंड 6 पहले हमने ऐसे रखा, लेकिन साइनाइड जब आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? एब्सोल्युटली होगी. पेयरिंग होगी तो नाउ देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो ऑब्वियसली अब मैं SCN की बात कर रही हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 CN आ जाएंगे, दिस इज 3D. यहाँ पर 2 CN आ जाएंगे तो V इंक्लूडेड D2, फिर उसके बाद ये 4S. ठीक है, यहाँ एक साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पर एक और साइनाइड आ जाएगा. नाउ इट्स P3. ओके, नाउ इट्स P3. सो यहाँ पर 3 साइनाइड और आ जाएंगे. सो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया. सो इट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सिमिलरली विद B and C बेसिकली, सिमिलरली विद B and C. सो वी आर गोइंग टू मार्क ऑल ऑफ दीज. मुझे पता है मैंने बहुत सारा टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्पेंड कर दिया, करना नहीं था, लेकिन आई थॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. वेल आई नो सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा. दैट्स रियली वेरी गुड ऑफ यू. मूविंग अहेड विदाउट अ डिले एंड लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्या टिप्पणी देंगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में. FeH2O6 पॉजिटिव एंड FeCN6 पॉजिटिव, दे बेसिकली डिफर इन ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर. बताइए भाई, ये तो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है. इसके बारे में मैं आंसर करूं कि नहीं करूं? जस्ट लेट मी नो. आंसर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप ही मुझे जल्दी से इसका आंसर बता देंगे इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
And yes, no wrong answers. All of you should have to give me the right answer of this particular question. सभी को सही जवाब देना है मुझे. Yes. तो बताइए, अगर मैं what is it? आंसर दीजिए. और अब मैं बताऊंगी what actually is the answer of this question. Most of you have given the right answer, but some of you might have not given the right answer. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. मैम क्यों बताइए क्यों? रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लीगेंड. साइनाइड जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड H2O क्या है? इट्स अ वीक फील्ड लीगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड डू हैव द पावर टू do what? Strong field ligand is actually going to pair up the electrons and weak field ligands में इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो पेयरिंग अप कर सके. एब्सोल्युटली राइट. वेल, ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए दोनों ही केस में आयरन के +3 है. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखा जाए दोनों ही केसेस में 6 है. स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही बात, ये +3. ठीक है, ओके. मैग्नेटिक नेचर डिफरेंट होगा. रीजन बीइंग Fe+3, Fe in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इट इज 3d5. अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो क्या किया जाएगा? अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो क्या किया जाएगा? मैं बात कर रही हूं H2O वाले केस की. 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लीगेंड फॉर FeH2O 6 3 पॉजिटिव के बारे में. तो यहां पर देयर विल बी नो पेयरिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. ये है मेरा वीक फील्ड लीगेंड H2O वाला केस. यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो इट विल बी 5 × 5 + 2 7. दैट मीन्स 5 7s are 35. यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट 35 आएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में बात करती हूं तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5. सो इट्स 1 2 ओके 3 4 5. पहले ऐसे, लेकिन अब इसकी अगर हम पेयरिंग कर दें तो let's have a look. It's 1 2 3 4 and 5. We have only one unpaired electron. एक unpaired electron है. तो इसका magnetic moment क्या हो जाएगा? It's 1 × 1 + 2 √3 हो जाएगा. तो yes, there is difference in the magnetic nature. I hope you got the point. 1 2 3 4 5. ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलिए अब इसके बारे में बताइए. पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन. पाई बॉन्डिंग इज बेसिकली नॉट इन्वॉल्व्ड इन फेरोसिन, डाइबेंजीन क्रोमियम, जीसस सॉल्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बताइए इसका क्या आंसर देना चाहेंगे? What particular answer you are going to give me for this particular question? ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. देखते ही क्वेश्चन बनेगा आपसे, देखते ही आप इसका राइट आंसर मार्क करेंगे. देखते ही. वेल, एब्सोल्युटली राइट. आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, आंसर जो दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है. इसके अंदर पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, जो कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली RMgX वी एक्चुअली टॉक अबाउट. कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है. लेकिन फेरोसिन की अगर मैं बात करती हूं, अगर फेरोसिन का हम स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज आवर फेरोसिन स्ट्रक्चर. ये हमारा फेरोसिन का क्या है? स्ट्रक्चर है. Fe5 and it's C5H5 2. तो हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं? बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2. बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2. ठीक है. अगर मैं डाइबेंजीन क्रोमियम की बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट डाइबेंजीन क्रोमियम, सो इट्स जस्ट हैव ए लुक. डाइबेंजीन क्रोमियम, ओके, looks like this. तो यहाँ पाई बॉन्डिंग तो इन्वॉल्व है ना भाई. So it's dibenzene chromium. We can write it like this also. Okay. Talking about Zie's salt. So it looks like यहाँ पाई बॉन्डिंग है भाई, है. यहाँ पाई बॉन्डिंग है. So this is our Zie's salt. Clear? समझ में आ रही हैं चीजें? आनी चाहिए. ठीक है. ये तो आपने बहुत बार देखा होगा. क्यों? बिल्कुल सही मैम, बहुत बार देखा है हमने इसको. And over here you can just have a look. This is our Zie's salt involving the pi bonding. We are left with only Grignard reagent जहां pi bonding involved नहीं है. ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है, चलें आगे.
चलिए आगे की बात करते हुए चलते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। यहां हमसे पूछा है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है ऑफ द वैल्यू ऑफ CFSE। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ CFSE डेल्टा नॉट फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। इट्स कॉपर कॉम्प्लेक्स, ओके, then RH complex and then iridium complex, rhodium and iridium complex। तो इसका क्या सही जवाब देना चाहेंगे? What will be the right answer of this particular question? So यहाँ पर अब आप यहाँ पर ना CFSE कैलकुलेट करने मत लग जाना। डोंट कैलकुलेट CFSE, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ CFSE कैलकुलेट करने की, हमें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन देखते ही बनेगा। सिंपली आपको ये याद रखना है कि CO, RH एंड IR ये ऐसे होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं, ये सेम ग्रुप के ही हैं एक तरह से, हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा 3D ट्रांजिशन मेटल है, ये 4D और ये 5D, ठीक है। सो व्हेन वी एक्चुअली मूव डाउन द ग्रुप लाइक दिस, तो जब हम 3D से 4D में आते हैं, जब हम 3D से 4D में आ रहे हैं, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन एंड लेट मी टॉक टू यू देन। जब हम 3D से 4D में आ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 30% इंक्रीज इन CFSE हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है CFSE में। और जब हम 4D से 5D में आते हैं तो याद रखिएगा 50% इंक्रीज इन CFSE होगा, 50% इंक्रीज इन CFSE हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो CFSE की वैल्यू का जो ऑर्डर है वो ये होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेल, विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, DD splitting increases, which makes CFSE crystal field splitting energy to be higher। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात ये तो आपने पढ़ी थी। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है डियर वंस। So this was all about this particular session and I rest my case here only. Hope that you have enjoyed the session solving the questions with me. We'll bring more such sessions for all of you guys in the near future. So subscribe the channel for the further notifications. Thank you so much dear ones. All the best for your preparation. Practice hard and yes, come out with the flying colors. Bye bye and take care.